बिजनेस स्टडी, मंथली एग्जामिनेशन अगस्त. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री? देयर आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंटरपोर्ट? Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Interport is a trading center where goods are imported, stored and re-exported without paying custom duty. Next question, what is profession? Profession is a skilled occupation requiring special knowledge and training like doctors or lawyers. Profession is a skilled occupation requiring special knowledge and training like doctors or lawyers. Profession is a skilled occupation requiring special knowledge and training like doctors or lawyers. Next question, what do you mean by business risk? Business risk refers to the possibility of loss or lower profit due to uncertainties like market changes, competition, or natural disaster. Business risk refers to the possibility of loss or lower profit due to uncertainty like market changes, competition, or natural disaster. Business risk refers to the possibility of loss or lower profit due to uncertainty like market changes, competition, or natural disaster. Next question, distinguish between commerce and trade. डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉमर्स एंड ट्रेड. पहला कॉमर्स, इसका मतलब होता है इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीनिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मीनिंग इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फंक्शन कॉमर्स का, हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. हेल्प्स इन द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर. नेक्स्ट, ट्रेड. ट्रेड का मतलब होता है रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फंक्शन इन्वॉल्व्स डायरेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. इन्वॉल्व्स डायरेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. राइट टू एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. पहला, वाइडर मार्केट एक्सेस. वाइडर मार्केट एक्सेस. वाइडर मार्केट एक्सेस. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स गुड. अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवर्स गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल ट्रेडिंग. State the characteristics of sole trading. So there are many characteristics of sole trading such as single partnership, unlimited liability, full control, profit and losses BLR. Single partnership, unlimited liability, full control, all profit hand in one person, या all losses hand over in one person to one person. Single partnership, unlimited liability, full control, profit and losses. Next question, what is debenture? Debenture are loans taken by the companies from the public with a promise to repay with interest. Debenture are loans taken by companies from the public with a promise to repay with interest. Debenture are loans taken by companies from the public with a promise to repay with interest. Debenture are loans taken by companies from the public with a promise to repay with interest. Next question, what is prospectus? What is prospectus? A prospectus is a legal document issued by a company to invite the public to buy its share or debenture. A prospectus is a legal document issued by a company to invite the public to buy its share or debenture. A prospectus is a legal document issued by a company to invite the public to buy its share or debenture. And next question, what do you mean by auxiliary to trade? Auxiliary to trade are services that help in the smooth flow of trade. These include transport, banking, advertising, etc. Auxiliary to trade. Auxiliary to trade are services that help in the smooth flow of trade. These include transport, banking, advertising, etc. Auxiliary to trade are services that help in the smooth flow of trade. These include transport, banking, advertising, etc. अगला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड? व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर? व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट आर देयर? To trade is a buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. Trade is the buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. Trade is the buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. Trade is the buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. Types. पहला इंटरनल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड मीन्स
trade within a country. Internal trade means trade within a country. It includes wholesale trade or retail trade. Wholesale trade or retail trade. अगला external trade. External trade, trade between countries, trade between countries, that is called external trade. It includes import, export, interport. फिर से एक बार रिपीट. Trade is the buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. Trade is the buying and selling of goods and services to earn profit. It helps in the smooth distribution of goods from producer to consumer. There are mainly two types. पहला इंटरनल ट्रेड और दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड जो कंट्री के अंडर हो, ट्रेड विद इन अ कंट्री, इसमें दो चीजें आ जाती हैं, पहला होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड. अगला एक्सटर्नल ट्रेड, वह ट्रेड जो कंट्री के साथ हो, पहला कंट्री दूसरे कंट्री के साथ करे. इसमें तीन चीजें आती हैं, इंटरपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, या फिर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, what do you mean by sole trading? Explain in brief the merits of sole trading. To a sole trader is a business owned and managed by a single person. The owner is responsible for all profit, losses and decision making. A sole trader is a business owned and managed by a single person. The owner is responsible for all profit, losses and decision making. It is the simplest and most common form of business. It is the simplest and most common form of business. A sole trader is a business owned and managed by a single person. The owner is responsible for all profit, losses and decision making. It is the simplest and most common form of business. There are some merits points for sole trader, such as easy formation, full control, quick decision making, sole profit enjoyment, personal touch. Easy formation, full control, quick decision making, sole profit enjoyment, personal touch. Next question, discuss the characteristics of business. Discuss the characteristics of business. So there are many types of characteristics of business. There are many characteristics of business such as economic activity, profit motive, risk and uncertainty, continuous process, legal and social responsibility. Economic activity, profit motive, risk and uncertainty, continuous process, legal and social responsibility. Economic activity, profit motive, risk and uncertainty, continuous process, legal and social responsibility. Next question, distinguish between trade, commerce and industry. ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. तो पहला बात करते हैं ट्रेड. ट्रेड, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट पॉइंट, पार्ट ऑफ कॉमर्स फोकसिंग ओनली एक्सचेंज. पार्ट ऑफ कॉमर्स फोकसिंग ओनली एक्सचेंज. दैट ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ कॉमर्स एंड फोकसिंग ओनली एक्सचेंज. नेक्स्ट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड. पहला इंटरनल ट्रेड, दूसरा एक्सटर्नल ट्रेड. एग्जांपल, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स. अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स. नेक्स्ट, कॉमर्स include trade and all supporting activities like banking, transport, ensure a smooth distribution of goods and services. Include trade and all supporting activities like banking, transport, ensure a smooth distribution of goods and services. Include trade and all supporting activities like banking, transport, ensure a smooth distribution of goods and services. दूसरा पॉइंट होगा ensure the smooth distribution of goods and services. पहला पॉइंट इंक्लूड ट्रेड एंड ऑल सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. नेक्स्ट, कॉमर्स में दो चीजें आती हैं, पहला ट्रेड एंड दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड. पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका पॉइंट है हेल्प्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ प्लेस टाइम. हेल्प्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ प्लेस एंड टाइम. एग्जांपल, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट. ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट. एंड लास्ट, इंडस्ट्री involves production and processing of goods. Involves production and processing of goods. There are three types: primary, secondary, tertiary industry. Primary, secondary or tertiary. Next, convert raw material into finished product. Convert raw material into finished product. Basic of trade and commerce. अगला पॉइंट था बेसिक ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ये एक बेस होता है ट्रेड और कॉमर्स दोनों का. एग्जाम्पल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, फार्मिंग ऑफ व्हीट. एक बार फिर से तीनों को पढ़ते हैं, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ट्रेड में पहला पॉइंट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. दूसरा पॉइंट पार्ट ऑफ कॉमर्स फोकसिंग ओनली एक्सचेंज. पार्ट ऑफ कॉमर्स फोकसिंग ओनली एक्सचेंज. नेक्स्ट पॉइंट, टू टाइप्स, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड. एग्जांपल, अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स. अ शॉपकीपर सेलिंग क्लॉथ्स. नेक्स्ट, कॉमर्स इंक्लूड ट्रेड एंड ऑल सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. इंक्लूड ट्रेड एंड ऑल सपोर्टिंग एक्टिविटीज लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट, इंश्योर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इंश्योर द स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. टू पार्ट्स होते हैं इसमें. नेक्स्ट पॉइंट है टू पार्ट्स, पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड. पहला ट्रेड, दूसरा ऑक्सिलरी टू ट्रेड. अगला, हेल्प्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ प्लेस एंड टाइम. हेल्प्स इन ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ प्लेस एंड टाइम. एंड एग्जांपल, लास्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट. ट्रांसपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू मार्केट. अगला, इंडस्ट्री. इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स. इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स. देयर आर थ्री टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी. Convert raw materials into finished product.
अगला पॉइंट बेसिक ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, बेसिस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार, फार्मिंग ऑफ wheat, etc. And the last question is what is meant by a company? State any four characteristics of company. So a company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activity. It has a separate legal entity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It has a separate legal entity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It has a separate legal identity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It has a separate legal identity from its owner. Characteristics of company. Characteristics of company. पहला सेपरेट लीगल एंटिटी, अगला लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। मंथली एग्जामिनेशन अक्टूबर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। पहला मेंबरशिप बाय बर्थ, membership by birth, and next Kaltaj control. Next question, write two names of communities of Hindu law. Write the names of two communities of Hindu law. पहला होता है मिताक्षला और दूसरा होता है दया भागा। मिताक्षला जो सिस्टम है, जो मिताक्षला कम्युनिटी है, वह पूरा का पूरा इंडिया में फॉलो किया जाता है, दो जगहों को छोड़कर, वेस्ट बंगाल, असम। वहीं पे दया भागा जो सिस्टम है वह वेस्ट बंगाल और असम में फॉलो किया जाता है और कहीं नहीं फॉलो किया जाता। मिताक्षला फॉलो थ्रू आउट इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्ट बंगाल एंड असम। Mitakshala community follow throughout India except in West Bengal and Assam. Daya Bhaga follow mainly in West Bengal and Assam. Next question, what is called partnership deed? Partnership deed is a written agreement that defines the terms, rights and duties of partners in a business. Partnership deed is a written agreement that defines the terms, rights and duties of partners in a business. Partnership deed is a written agreement that defines the terms, rights and duties of partnership in a business. Next question, what are the benefits of registration of a partnership firm? What are the benefits of registration of a partnership firm? So there are many benefits such as legal recognition, better credibility, easy loan access, dispute resolution. Legal recognition मिलता है, better credibility, easy loan access, dispute resolution. Legal recognition, better credibility, easy loan access, dispute resolution. Legal recognition, better credibility, easy loan access, dispute resolution. Next question, state two function of the cooperative credit society. पहला providing loans. Next encouraging savings. पहला providing loan, दूसरा encouraging saving. पहला providing loan, दूसरा encouraging saving. Next question, define cooperative organization. A cooperative organization is a group of people who work together for mutual benefits following democratic principle. A cooperative organization is a group of people who work together for mutual benefits following democratic principle. A cooperative organization is a people of group who work together for mutual benefits following democratic principle. Next question, state the types of business finance. So there are mainly three types of business finance. पहला short term finance, medium term finance and long term finance. In a short term finance, funds for daily operating जैसे trade credit. Short term finance fund for daily operating जैसे trade credit. Short term finance fund for daily operating जैसे trade credit. Medium term funds for 1 to 5 years. Medium term finance fund for 1 to 5 years. Long term finance funds for more than 5 years. Next question, state the types of business finance. ये तो हो गया, state the types of business finance. There are mainly three types of business finance, medium term, short term, long term. अगला क्वेश्चन, why is equity share capital called risk capital? Why is equity share capital called risk capital? Because इसका जो फिक्स रिटर्न है वो हमें नहीं मिलता, कोई भी इसका फिक्स रिटर्न नहीं है. एंड नेक्स्ट, लास्ट इन रीपेमेंट. इट मीन्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज. या फिर मार्केट फ्लैक्चुएशन. तीन रीजन है, पहला नो फिक्स रिटर्न, दूसरा मार्केट फ्लैक्चुएशन एंड लास्ट इन रीपेमेंट. इन केस ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज. फिर से एक बार पढ़ते हैं, व्हाई इज इक्विटी शेयर कैपिटल कॉल्ड रिस्क कैपिटल? बिकॉज देयर आर मेनली थ्री रीजंस. पहला नो फिक्स रिटर्न, दूसरा मार्केट फ्लैक्चुएशन एंड थर्ड लास्ट इन रीपेमेंट. इट मींस इन केस ऑफ लिक्विडेशन इक्विटी शेयर होल्डर आर पेड लास्ट आफ्टर ऑल लाइबिलिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री?
स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यानी SSI आर स्मॉल बिजनेस विथ लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एंड वर्कफोर्स फोकसिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर स्मॉल बिजनेसेस with limited investment and workforce focusing on manufacturing and services. Small scale industries are small businesses with limited investment and workforce focusing on manufacturing and services. And next question, what are the advantages of a small scale industry? There are many advantages of small scale industries such as employment generation, low capital requirement, encouraging entrepreneurship, support regular development. Employment generation, low capital requirement, encourages entrepreneurship, support rural development. अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो देयर आर मेनी मेरिट्स सच एज इजी फॉर्मेशन, इफेक्टिव कंट्रोल, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट। इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन, इजी फॉर्मेशन। नेक्स्ट इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कंटिन्यू एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग फैमिली support. Next question, define partnership, differentiate between sole proprietorship and partnership. Define partnership, differentiate between sole proprietorship and partnership. पहले बात करते हैं partnership. Partnership is a business where 2 or more people share profits and responsibility. Partnership is a business where 2 or more people share profits and responsibilities. अब sole proprietorship and partnership में difference. पहले बात करते हैं sole proprietorships. Ownership single owner, ownership single owner. Next liability unlimited. Sole proprietorship का liability unlimited. Next decision making in a sole proprietorship, quick decision making, one people control because of one people control. Next profit sharing, entire profit goes to the owner, entire profit goes to the owner. Legal formalities minimal, बहुत कम की जरूरत होती है in a sole proprietorship. Next partnership, partnership ownership 2 or more partner, 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर के बीच में ओनरशिप रहता है. नेक्स्ट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप की वो अनलिमिटेड रहती है, अनलिमिटेड रहती है. इसमें एक्सेप्शंस में आते हैं LLP. अगर डिसीजन मेकिंग पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स है उनके बीच में शेयर होता है तब जाके डिसीजन हुआ होता है, इसमें बहुत समय भी लगता है. अगला प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है पूरे के पूरे पार्टनर में, 2 या 3 पार्टनर होते हैं उनमें वो प्रॉफिट शेयर हो जाता है, केवल एक आदमी इसका हकदार नहीं होता. नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटीज, रिक्वायर ऑफ पार्टनरशिप डीड, इसमें पार्टनरशिप में हमें पार्टनरशिप डीड की जरूरत पड़ती है. अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एनी 5 मेन डिफरेंसेज बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर. डिस्क्राइब एनी 5 मेन डिफरेंसेज बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर. पहले बात करते हैं शेयर्स. शेयर्स का मतलब होता है ओनरशिप इन अ कंपनी, ओनरशिप इन अ कंपनी. होल्डर, शेयर को जो होल्ड करता है उससे शेयर होल्डर कहते हैं और ये ऑनर होता है, ऑनर होता है. अगला शेयर में जो रिटर्न मिलता है वो डिविडेंड के रूप में मिलता है, वह प्रॉफिट बेस होता है. डिविडेंड मिलता है लेकिन वह प्रॉफिट बेस पे रहता है. अगला शेयर में जो रीपेमेंट होता है वह रीपेड नहीं होता है अगर उसे हम लोग बाई बैक ना करें तब. बाईबैक जब करेंगे वो एक एक्सेप्शन है, नहीं तो उसके पर रीपेड नहीं मिलता. अगला सिक्योरिटी, शेयर जो है वो अनसिक्योर होता है क्योंकि हमारे पास कोई भी उसके लिए कोलेटरल नहीं है. वहीं पर डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब होता है लोन टेकन बाय द कंपनी, लोन टेकन बाय द कंपनी. अब जो डिवेंचर लेता है उसके होल्डर को डिवेंचर होल्डर कहते हैं, डिवेंचर होल्डर कहते हैं और ये क्रेडिटर होता है. अगला डिवेंचर रिटर्न, इसका एक फिक्स इंटरेस्ट होता है इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो या नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे इसको फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जिसके बाद डिवेंचर होता है. अगला रीपेमेंट, रीपेड आफ्टर अ फिक्स पीरियड. डिवेंचर एक फिक्स पीरियड के बाद रीपेड कर दिया जाता है लेकिन जो शेयर है वो रीपेड नहीं होता. सिक्योरिटी, जो डिवेंचर है कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट. डिवेंचर जब हम लोग खरीदते हैं हमें एक एसेट मिलता है उसके बदले. अगला क्वेश्चन, explain the importance of small scale industries in Indian economy. Explain the importance of small scale industries in Indian economy. So there are many importance of small scale industries in Indian economy are employment generation, employment generation, employment generation, low capital requirement, low capital requirement, balance regional development, balance regional development, contribution to GDP, contribution to GDP, export promotion, export promotion, encouraging entrepreneurship, encourages entrepreneurship, support to large industry, support to large industry. पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दूसरा लो कैपिटल रिक्वायरमेंट और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, इंकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप, सपोर्ट टू लार्ज इंडस्ट्री. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मींट बाय प्रेफरेंशियल शेयर. व्हाट इज मींट बाय प्रेफरेंशियल शेयर, हाउ आर देयर काइंड्स. तो प्रेफरेंशियल शेयर गिव शेयर होल्डर अ फिक्स्ड डिविडेंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर अर्न प्रायोरिटी इन एसेट रीपेमेंट बट यूजुअली नो वोटिंग राइट्स. प्रेफरेंशियल give shareholder a fixed dividend before equity shareholder. Preferential give shareholder a fixed dividend before equity shareholder and priority in assets repayment but usually no voting rights. Preferential give shareholder a fixed dividend before equity shareholder and priority in assets repayment but usually no voting right. Preferential give shareholder a fixed dividend before equity shareholder and priority in assets repayment but usually no voting rights. There are many types such as cumulative, cumulative, non-cumulative, participating, non-participating, redeemable, irredeemable. Monthly examination November.
वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. पहला प्रोवाइडिंग लोन्स एंड अगला इनकरेजिंग सेविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड. A partnership deed is a written agreement that defines the rules and responsibilities of partners in a business. A partnership deed is a written agreement that defines the rules and responsibilities of partners in a business. Next question, differentiate between company and partnership. First, company ownership owned by shareholder. Legal status, company has a separate legal entity. Next, liability, limited liability of shareholders in a company. Partnership, ownership owned by two or more partners. Legal status, no separate legal entity in a partnership. Next is liability. In a partnership, partners have unlimited liability. Next question, state two main characteristics of company. पहला, separate legal entity. Next, limited liability. Next question, for what purposes can a company not be formed. किस पर्पस के कारण कंपनी कभी नहीं बनती. पहला, illegal activity. Next, immoral or unethical purposes. और illegal activities या immoral or unethical purposes. Next question, what is a memorandum of association. MOA. The memorandum of association MOA is a legal document that defines a company's name, objectives and scope of operation. The MOA is a legal document that defines a company names, objectives and scope of operation. The memorandum of association MOA is a legal document that defines a company's name, objectives and scope of operation. Next question, define business finance. Business finance is the money needed to start, run and grow a business. Business finance is the money needed to start, run and grow a business. Business finance is the money needed to start, run and grow a business. Next question, what do you mean by equity share? Equity share represent ownership in a company without voting rights and profit sharing. Equity shares represent ownership in a company without equity share represent ownership in a company with voting rights and profit sharing. Equity shares represent ownership in a company with voting rights and profit sharing. Next question, write any three differences between shares and debenture. पहले बात करते हैं शेयर. Ownership represent ownership in the company. Next, return, shareholders get dividend. And last, repayment, not repaid by the company in a share. अगला, debenture, ownership represent a loan to the company, in a debenture represent a loan to the company. अगला, debenture return, debenture holders gets fixed interest. Repaid after a fixed period, in a debenture repaid after a fixed period. And last question, what do you understand by fixed capital? Fixed capital is the long-term investment in assets like land, machinery and building for business use. Fixed capital is the long-term investment in assets like land, machinery and building for business use. Fixed capital is the long-term investment in assets like land, machinery and building for business use. अगला क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन. इसमें पहला क्वेश्चन है, what are the advantages of registration of a firm? What are the effects of non-registration? तो पहले बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म. पहला, राइट टू स्यू, SUE. राइट टू स्यू मीन्स द फर्म कैन फाइल अ केस अगेंस्ट आउटसाइडर टू इन्फोर्स इट्स क्लेम. जो बिजनेस है यानी जो फर्म है वह फाइल कर सकता है, उस केस कर सकता है. ओके, किस कारण? बाहर जिन्होंने उनको क्लेम किया था कि अगर आपका नुकसान होगा तो हम इसकी भरपाई करेंगे. एंड दूसरा, लीगल रिकॉग्निशन, इजी एक्सेस टू लोन्स, बेटर क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी टू फाइल केसेस अगेंस्ट पार्टनर. एडवांटेज रजिस्ट्रेशन का पहला, राइट टू स्यू, SUE. अगला, लीगल रिकॉग्निशन, इजी एक्सेस टू लोन्स, बेटर क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी टू केसेज अगेंस्ट पार्टनर्स. पहला, राइट टू स्यू, लीगल रिकॉग्निशन, इजी एक्सेस टू लोन्स, बेटर क्रेडिबिलिटी, एबिलिटी टू फाइल केस अगेंस्ट पार्टनर. अब इसी में दूसरा पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म.
पहला लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन, लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। अगला लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, नो राइट्स टू शो द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट आउटसाइडर टू इन्फोर्स इट्स क्लेम। पहला लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन, लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन नॉन रजिस्ट्रेशन अगर है तब। लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, पहला लिमिटेड लीगल प्रोटेक्शन, लॉस ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड लास्ट नो राइट्स टू शो, नो राइट्स टू शो SUE द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट आउटसाइडर टू इन्फोर्स इट्स क्लेम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कंपनी। अ कंपनी is a legal entity formed for business purposes. A company is a legal entity formed for business purposes. It is registered under the Company Act 2030 and has a separate identity from its owner. A company is a legal entity formed for business purposes. It is registered under the Company Act 2013 and has a separate identity from its owner. A company is a legal entity formed for business purposes. It is registered under the Companies Act 2013 and has a separate legal identity from its owner. There are many advantages such as separate legal identity, limited liability, perpetual succession, easy share transfer, ability to raise large capital. पहला separate legal identity, limited liability, perpetual succession, easy share transfer और last ability to raise large capital, separate legal identity, limited liability, perpetual succession, easy share transfer and last ability to raise large capital. Next question, what factors should a businessman keep in mind while selecting the form of business organization? What factors should a businessman keep in mind while selecting the form of business organization? So a businessman should consider the following factors before choosing a business structure, such as nature of business, capital requirement, liability, control and management, continuity and stability, taxation, flexibility of growth, government regulation, risks and liability और sharing. पहला है नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लाइबिलिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, टैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिस्क एंड लाइबिलिटी शेयरिंग. नेचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, लाइबिलिटी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, टैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ग्रोथ, गवर्नमेंट रेगुलेशन, रिस्क एंड लाइबिलिटी और शेयरिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस मेन सोर्सेज ऑफ 3. पहला होता है इंटरनल सोर्सेज, इट मीन्स ऑनर्स मनी. ऑनर्स मनी 3 तरीके से आ सकते हैं, रिटेन अर्निंग, सेल ऑफ असेट और ऑनर्स कैपिटल. पहला होता है इंटरनल सोर्सेज, इट मीन्स ऑनर्स मनी यानी मालिक का पैसा. ये 3 तरीके से आ सकता है, रिटेन अर्निंग, सेल ऑफ एसेट्स, ऑनर्स कैपिटल. दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्सेज, बोरोड मनी यानी उधार लेकर पैसा. ठीक है, यह इसमें 3 तरीके से उधार लिया जा सकता है. बोरो मनी हम लोग 3 तरीके से ले सकते हैं. पहला और लॉन्ग टर्म जो 5 साल से ज्यादा का हो, ये 5 साल से ज्यादा हमें 3 जगहों पर मिल सकता है, जैसे इक्विटी शेयर के माध्यम से, डिवेंचर, बैंक लोन. और लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो 5 साल से ज्यादा होता है वो हमें इक्विटी शेयर, डिवेंचर या फिर बैंक लोन, इन तीनों में से कोई से भी मिल सकता है. अगला मीडियम टर्म बिजनेस फाइनेंस जो 1 से 5 साल तक के लिए हम लोग करवाते हैं, यह 3 जगहों से मिल सकता है. पहला बैंक लोन या फिर लीजिंग या फिर हायर परचेज यानी बाइंग इन इंस्टॉलमेंट. अब एंड लास्ट शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो 1 से 5 साल तक का बीच का हो, यह 3 जगह से हम ले सकते हैं. पहला बैंक लोन, दूसरा लीजिंग, LEASING लीजिंग, और अगला हायर परचेज यानी बाइंग इन इंस्टॉलमेंट. एंड लास्ट होता है शॉर्ट टर्म जो 1 साल से कम का बिजनेस फाइनेंस हो, जैसे ट्रेड क्रेडिट, जब सामान खरीदने जाए तो जो हम लोग उधार पे ले जाते हैं, दैट इज ऑल्सो ट्रेड क्रेडिट. अगला बैंक ओवरड्राफ्ट जो हमें बैंक देता है कुछ एक्स्ट्रा पैसे निकालने का ऑप्शन. एंड लास्ट कमर्शियल पेपर. शॉर्ट टर्म हम लोग 3 जगह से ले सकते हैं, ट्रेड क्रेडिट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कमर्शियल पेपर. एंड द लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 5 मेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. पहला इजी फॉर्मेशन, दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी, तीसरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल, चौथा स्टेबल एग्जिस्टेंस एंड लास्ट सोशल वेलफेयर. इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, स्टेबल एग्जिस्टेंस, सोशल वेलफेयर. पहला इजी फॉर्मेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, स्टेबल एग्जिस्टेंस, सोशल वेलफेयर. मंथली एग्जामिनेशन दिसंबर. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, व्हाई इज कंपनी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन? Because it has 2 reasons. पहला, it has a separate legal identity from its owner.
and second is it can own property and enter into contracts. It can own property and enter into contracts, but it has no physical existence. It can own property and enter into contracts, but it has no physical existence. First point, it has a separate legal identity from its owner, and second, it can own property and enter into contracts, but it has no physical existence. It can own property and enter into contracts, but it has no physical existence. Next question, state any two demerits of company. First, complex and costly formation. Complex and costly formation, and second is lack of flexibility. Lack of flexibility or complex and costly formation. Complex and costly formation, lack of flexibility. Third question, what are the points to be considered while starting a business? Point to consider while starting a business. Points to consider while starting a business, such as business idea, market research, legal structure, funding and capital, business plan, location. Business idea, market research, legal structure, funding and capital, business plan, location. Next question, what do you mean by private sector? The private sector includes business owned by individual or groups aiming for profit, not the government. Example, Reliance and local shops, etc. The private sector includes business owned by individuals or groups aiming for profit, not the government. Example, Reliance and local shops, etc. The private sector includes business owned by individual or groups aiming for profit, not the government. Example, Reliance and local shops, etc. अगला, write a note on joint sector. Write a note on joint sector. पहला, shared ownership. It means both the government and private parties invest in and own the business. Both the government and private parties invest in and own the business. Both the government and private parties invest in and own the business. And second, risk sharing. Financial risks and profits are shared between the government and private sectors. पहला था shared ownership. Shared ownership. Both the government and private parties invest in and own the business. Second, risk sharing. Risk sharing. Financial risks and profits are shared between the government and private sector. अगला क्वेश्चन 6 नंबर, make a list of 5 public companies of Indian private sector. Make a list of 5 public company of Indian private sector. पहला, Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited. Next, Tata Consultancy Services. Tata Consultancy Services. Infosys Limited. Infosys Limited. HDFC Bank. Wipro Limited. Asian Paint. HDFC Bank. Wipro Limited. Asian Paints. Reliance Industries Limited. Tata Consultancy Services. Infosys Limited. HDFC Bank. Wipro Limited. Asian Paints. Next question, what are the features of cottage and rural industry? Features of cottage and rural industries are a small scale operation, home based production, low technology use, local intensive. A small scale operation, home based production, low technology use, local intensive. Next question, what do you mean by wholesaler? A wholesaler buys goods in bulk and sells them to retailers in a smaller quantity at lower prices. A wholesaler buys goods in bulk and sells them to retailers in a smaller quantity at lower prices. A wholesaler buys goods in bulk and sells them to retailers in a smaller quantities at lower prices. A wholesaler buys goods in bulk and sells them to retailers in a smaller quantities at lower prices. Next question, what are shopping malls? A shopping mall is a large building with many shops, restaurants and entertainment options in one place. A shopping mall is a large building with many shops, restaurants and entertainment options in one place. A shopping mall is a large building with many shops, restaurants and entertainment options in one place. And the last question is, why is equity share capital called risk capital? Why is equity share capital called risk capital? Equity share capital is called risk capital because shareholder risks losing their investment if the company fail. The equity share capital is called risk capital because shareholder risks losing their investment if the company fail. Equity share capital is called risk capital because shareholder risks losing their investment if the company fail. Long answer type question. First question is, differentiate between public sector and private sector. पहले बात करते हैं public sector. Owned and managed by the government. Owned and managed by the government. Owned and managed by the government. दूसरा point, focuses on public welfare and services. Focuses on public welfare and service. Focuses on public welfare and service. Example, Indian Railways, BSNL. Example, Indian Railway, BSNL. Indian Railway, BSNL. Next, funded by taxpayer money and government budget. Funded by taxpayer money and government budget. Next, government control and regulation. Government controls and regulation. Government controls and regulation. And last point, profit are used for public welfare.
प्रॉफिट्स आर यूज फॉर पब्लिक वेलफेयर। अगला प्राइवेट सेक्टर, ऑन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल, ऑन एंड मैनेज बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल। नेक्स्ट पॉइंट, फोकसेज ऑन प्रॉफिट मेकिंग, फोकसेज ऑन प्रॉफिट मेकिंग। एग्जाम्पल, रिलायंस टाटा ग्रुप, रिलायंस टाटा ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट, फंडेड बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल, funded by private investment and capital, operates with less government interference, operate with less government interference, operate with less government interference. And last point, profit go to shareholders or owners, profit go to shareholders or owners. And 12th question is, describe in brief the various factors affecting choice of form of business organization. Describe in brief the various factors affecting choice of form of business organization. Factors affecting in choice of business organization. First, nature of business. First, nature of business, nature of business. Second, capital requirement, capital requirement. Third, liability, liability. Fourth, control and management, control and management. Continuity, continuity, continuity. Sixth, taxation, taxation. Seventh, regulation. And eighth, risk and flexibility. Nature of business, capital requirement, liabilities, control and management, continuity, taxation, regulation, risk and flexibility. Nature of business, capital requirement, liability, control and management, continuity, taxation, regulation, risk and flexibility. Next question, what do you mean by company? Discuss any three characteristics of company. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It is registered under the Company Act 2013 and has a separate legal identity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It is registered under the Company Act 2013 and has a separate legal identity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It is registered under the Companies Act and has a separate legal identity from its owner. A company is a legal entity formed by a group of people to carry out business activities. It is registered under the Company Act and has a separate legal identity from its owner. Three characteristics of company. पहला, separate legal identity, separate legal identity. Next, limited liability, and last, perpetual succession, separate legal identity, separate legal identity. अगला, limited liability, and last, perpetual succession. Next question, what is meant by debenture? What are its various types? Write their names. What do you mean by debenture? What are its various types? Write their name. A debenture is a type of loan taken by a company from the public. A debenture is a type of loan taken by a company from the people. The company pays fixed interest and repays the amount after a specific period. A debenture is a type of loan taken by a company from the public. The amount pays fixed interest. The company pays fixed interest and repay the amount after a specific period. A debenture is a type of loan taken by a company from the public. The company pays fixed interest and repays the amount after a specific period. A debenture is a type of loan taken by a company from the public. The company pays fixed interest and repay the amount after a specific period. There are many types of debenture, mainly three. Based on security, based on security. इसमें दो तरह के आते हैं, secured debenture, unsecured debenture. Based on security दो आते हैं, secured debenture, unsecured debenture. अगला based on convertibility, based on convertibility. इसमें दो आते हैं, convertible debenture, non-convertible debenture. Convertible debenture, non-convertible debenture. And last, based on repayment, based on repayment. इसमें दो आते हैं, redeemable debenture, irredeemable debenture, redeemable debenture, irredeemable debenture. And the last question, describe any 5 function of wholesaler. Describe any 5 function of wholesaler. पहला, bulk purchasing. दूसरा, storage and warehousing. अगला, risk bearing, financing, market information. Bulk purchasing, storage and warehousing, risk bearing, financing, market information. खत्म.